Good evening, everyone. A very good evening to all of you, bacho. We are live. We are back on ExamDost. We are back with the rank improvement course on EMFT. So I'm live again with all of you with the first important unit of EMFT, the core unit of EMFT, that is electrostatics. तो आप लोगों के लिए यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेकर के मैं हाजिर हूं. फटाफट सभी लोग आ जाइए. कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन करेंगे भाई. एंड बेटा अगर आपने पीछे का नहीं किया है 2 लेक्चर, आप ये करना चाहते हो तो यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट द वेक्टर कैलकुलस. रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन. ठीक है, अगर वेक्टर कैलकुलस का आइडिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर आपने नहीं भी लेक्चर्स अटेंड किए. बट इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट वेक्टर कैलकुलस तो देन तो इट कैन बी एन इशू. चलिए, so without wasting any time, let me get started. Let us review what we covered yesterday. Yesterday I told you about the equations of the lines and surfaces in 3D. So when x is variable, you get a line parallel to x-axis. If y is variable, x and z are fixed, we get a line parallel to y-axis. If z is variable, x and y are fixed, we get a line parallel to z-axis. Now, if I want the equation of a line passing through these 2 points, I can write the equation in this format. And this will give me the value of x, y, z in terms of t, where t varies from 0 to 1. Now, when I want a surface parallel to yz plane, the equation is x equal to a, parallel to xz, y equal to b, parallel to xy, z equal to c. Okay. And in general, the equation of a surface is r dot n cap equal to k, where n cap is the unit vector, r vector is the position vector, k is the perpendicular distance of the surface from origin. Area vector, beta, when we treat area as a vector quantity, the magnitude is equal to area. The direction is normal to the area. So in surface integration, we make use of the area vector. Surface integration basically represents the flux of a vector field to a surface. So if the coordinate x is constant, normal vector is ax cap. If y is constant, normal is ay cap. If z is constant, normal is az cap. In cylindrical coordinate, what are the locus? If z is variable, it is a vertical line. Rho variable, radial line. Phi variable, a circle. Rho phi variable, a disk. Then phi z variable, the hollow cylinder. Rho and z are variable. If rho and z are variable, you get a plane. If all are variable, you get a solid cylinder. Okay, you get a solid cylinder. Now spherical, beta, if r theta fixed, phi is variable, we get a circle. If r phi fixed, theta variable, we get a semicircle. If theta phi fixed, r is variable, we get a radial line. If theta phi are variable, we get a hollow sphere, or you can say a spherical surface. Okay. Now conservative field and line integral. The line integral is given by integration f dot dl, where c is the path, dl is along the tangent to the curve. Now, conservative field means the line integration depends only on the endpoints. It is independent of the path, because of which closed loop line integration is 0. For a conservative field, the curl is 0 and a vector field can be represented as gradient of phi. Now, work done in that case can be written as phi b minus phi a. That is, we can evaluate the potential at initial and final point. In surface integration, we write it as f dot ds. For solenoidal field, which is divergenceless, this is independent of the surface and only depends on the boundary of surface. In such a case, f vector can be written as del cross a, where a is called as vector potential. So generally, a vector field can be written as minus gradient of v plus curl of a, where v is the scalar potential, a is the vector potential. For triple integration, we do the integration of a scalar function. dv is a scalar quantity. We can use it to calculate mass charge. For dv in Cartesian, dx, dy, dz,
In cylindrical, rho d phi dz. Spherical, r square sine theta dr d theta d phi. Divergence theorem says that we can convert a surface integral over a closed surface to a volume integral. The condition is surface must be closed. V is the volume inside the surface, and a vector should be continuous and differentiable. Then only we can take the divergence. Okay, like 1 by r square, you cannot apply divergence theorem if the volume includes r equal to 0, because it will become infinite. अगर वॉल्यूम में ओरिजिन आ रहा है तो डाइवर्जेंस थ्योरम इस फंक्शन पे नहीं लगेगी. ओके, एंड देन आई टोल्ड यू डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाय आर स्क्वायर इज 4 पाई डेल्टा क्यूब आर, which is a 3D Dirac delta function. Then we saw Stokes theorem, in which we can convert a line integral to a surface integral. C is a curve which is a closed curve and it is bounding a surface S. So it relates the circulation of a vector field around a curve to the curl flux through S. Now beta, we also saw the parameterization for circle. It was center plus r cos theta, center plus r sin theta. And then for ellipse, center plus a cos theta, center plus b sin theta. We saw the method of evaluating line integration, either directly parameterize. If it is independent of path, take a straight line, potential function, and check if the curl is 0 for path independence. This is also applicable if conservative. Okay. Surface integration, define the normal, take the area vector, f dot ds, integrate over coordinate range. So now beta, this is the summary of your Gauss divergence theorem. This is your Stokes theorem. Conservative field माने closed loop line integral 0, curl 0, f is gradient of phi. Solenoidal field divergence 0, closed loop surface integration 0, b is del cross a. Okay. Just give me a moment बच्चों. Just एक मिनट रुक जाइए, मैं आता हूँ. Just give me a moment.
चलो, so let's get started with electrostatics, everyone. चलिए. So first we will talk about electrostatics. What is electrostatics actually? Whenever we study about the properties of a stationary charge. ऐसा मतलब कि अगर चार्ज आपका मूव नहीं कर रहा, तब चार्ज के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक. सर, डज इट ऑलवेज मीन्स कि दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट? नो बेटा. These properties will also be applicable if charge is under motion, but when charge is moving, there are additional properties of magnetism. Okay. Now, beta, what is the charge actually? Charge is the property of a body which is available whenever it loses or gains electrons. ठीक है? एक मिनट यार. हाँ बेटा. So basically when we talk about a atom has a nucleus surrounded by electrons. Now inside the nucleus we have protons which are positively charged particle, and outside the nucleus we have electron which are negatively charged. Now usually an atom is electrically neutral, which means the net charge is zero, proton are equal to electron. So when an atom loses electron, the protons will dominate. It is said to be positively charged. And when it gains electron, then electrons will dominate. Then it is said to be negatively charged. So that way, beta, an atom can be positively or negatively charged depending upon whether it gains electrons or loses electron. Now, SI unit of charge is Coulomb. Charge on an electron, everybody knows it is 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb. And how much charge is gained? If you lose or gain n electrons, it is equal to n into E. n electrons के लेन देन से कितना charge आता है? That is n into E. Now charge is transferable. Whenever the electrons are transferred from one body to other, the body donating electron will become positively charged. The body gaining electron will become negatively charged. Charge is associated with mass. Whenever electrons travel from one body to another, not only the charge is transferred, but mass is also transferred. Charge is conserved. Charge can neither be created nor be destroyed. That means you can neither create electron nor destroy electron. They can only be transferred. Charge is additive. If I give a body a 5 Coulomb charge and then again I give 3 Coulomb, the total charge can be algebraically added as 8 Coulomb. Charge can only be in multiple of E, so charge equal to any where n is a integer. Charge can produce electric and magnetic field, but for magnetic field, charge must be moving. Now, conductors and insulator. What are conductor? Conductor are those material where charge can easily flow through the material, whereas insulator are those where charge cannot easily propagate through the material. Basically, in conductor, there are lots of free electron. The electrons which have left the atom and can now freely flow through the material. While in insulator, these free electrons are very, very less, and hence you cannot see the current in a insulator. Okay. So basically free electrons are those which at room temperature
can be ionized from the atom, can come out of the atom and can help in the flow of current. रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन एटम का साथ छोड़ करके बाहर आ सकते हैं, करंट के फ्लो में आपकी मदद कर सकते हैं, दे आर सेड टू बी फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके, ये बात समझ में आ गई भाई. व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर. अब ये अपने को करने की ऐसा जरूरत नहीं है. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ज्यादा बच्चों वाला टॉपिक हो जाएगा. चलिए, now what are the different types of charge. First type of a charge is called as a point charge. Point charge का मतलब होता है when the entire charge of a body is concentrated at a single point. How is it possible, sir? It is only an approximation, beta. When the body containing the charge is very, very small as compared to the distance over which either you are computing electric field और यू आर कंप्यूटिंग द फोर्स. जितने डिस्टेंस पे आप फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, उसके मुकाबले बॉडी का साइज अगर बहुत ही कम रहता है, तो इट इज सेड टू बी अ पॉइंट चार्ज. ओके, इट इज सेड टू बी पॉइंट चार्ज. यू कैन सी इफ द पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डाइवर्जिंग, दे आर गोइंग आउट. इफ इट इज नेगेटिव, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कन्वर्जिंग, दे आर कमिंग इन. तो ये अंदर आ रही है. Second is the line charge. When the charge is divided but in a single dimension, that is over a curve. अगर चार्ज एक कर्व के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, then it is said to be line charge. So the line charge density unit is Coulomb per meter. And remember beta, if the charge distribution is uniform, uniform मतलब होता है it is equally spread throughout the body, then the charge density is constant. Okay. So if charge density is constant, it means it is a uniform charge distribution and the charge density is given as Q by L. It is given as Q by L. The unit is Coulomb per meter. Second is beta surface charge. When the charge is spread over a two-dimensional surface like this. Okay. Then surface charge density is charge per unit area. If it is constant, it is called uniform. If it is not constant, it is said to be non-uniform. Volume charge. Suppose you take a three-dimensional body, a three-dimensional solid, and the charge is distributed, it is embedded inside the body of the solid, then it is said to be volume charge distribution, and charge density is given as charge per unit volume. Charge density क्या होती है? Charge per unit volume. Here charge has penetrated inside the body of the sphere. Sphere की body के अंदर तक charge आपका घुस चुका रहता है. First law of electrostatics is the Coulomb's law. So what is Coulomb's law? Beta, Coulomb was a scientist that explained the force between two charges, 2-point charges. So first thing that he observed was like charges always repel each other, whereas the unlike charges attract each other. जो charges same nature के होते हैं, either both positive, both negative, they repel each other, whereas the charges which are of opposite polarity like minus plus, they will attract. So you can see between negative, negative, the force is away from each other. They are pushing each other away. Whereas when negative, positive are there, they are bringing each other closer. ये एक दूसरे को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं. Then what he observed beta, that based on action reaction law, the two forces are equal and opposite. If Q1 is applying a force on Q2, Q2 will apply equal and opposite force on Q1. अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है पास लाने के लिए, तो Q2 भी उतना ही फोर्स Q1 पे लगाएगा अपने पास लाने के लिए. Okay, so magnitude of the two forces are equal and their directions are opposite. Then he saw that the magnitude of force is proportional to product of charges and inversely proportional to the square of distance between charges. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल है फोर्स और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो फोर्स बिकम्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R square. Now the question remains, sir, what is proportionality constant? He wrote K as a proportionality constant, which is 1 by 4 pi epsilon.
Epsilon is the permittivity of the medium between the two charges. तो epsilon क्या होता है? Permittivity. Now what is permittivity? Many people say, sir, permittivity माने permission. Permission of a material to allow the passage of electric field lines. But exactly the definition is opposite. Permittivity is the opposition that a material offers to the passage of electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में एक मटेरियल कितनी रुकावट पैदा करता है उसे परमिटिविटी कहते हैं. इट इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. So for free space, K is 1 by 4 pi epsilon naught, which is 9 into 10 की power 9. 9 into 10 की power 9. ठीक है. संदीप भाई एक ही फॉर्मूला पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे, फॉर्मूला याद रहेगा. सेल एमटी के लिए बेटा विद्युत महापैक आपको टारगेट करना चाहिए. चलिए, नेक्स्ट इज द वेक्टर फॉर्म बेटा. नाउ आई नो द फोर्स मैग्नीट्यूड. I qualitatively know the direction whether force will be attractive or repulsive, but I need a vector form of Coulomb's law by which I can find the direction of force. So suppose beta I have two charges Q1 and Q2 where position vectors of these charges are R1 vector and R2 vector. R1 vector or R2 vector. Now this vector from 2 to 1 is R21 and the vector from 1 to 2 is R12. 1 से 2 जाओगे R12 कहूंगा, 2 से 1 जाओगे R21 कहूंगा. Assume both the charges are positive or both are negative, so they are applying repulsive force on each other. मान लो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो फोर्स तो रिपल्सिव बन रहा है. So the force of 2 on 1 is in the direction of R21. Force of 1 on 2, 1 2 का मतलब क्या है? 1 कितना 2 पे लगा रहा है, is parallel to R12. And what did Coulomb observe beta? Coulomb said if you join the two charges by a line, the force will always act along this line. अगर दो चार्जेस को एक लाइन से जोड़ दिया जाए तो फोर्स इस लाइन के along ही लगता है. So the distance between the charges is the magnitude of displacement vector mod R1 minus R2 or R2 minus R1. Okay, so this is the magnitude of the force. If I talk about F12, F12 is parallel to R12. So R12 is the direction. What is R12? R12 is R2 minus R1 by magnitude. R12 कैसे निकालें भाई? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना लिया. So when you divide it by magnitude, already there is magnitude square. For unit vector, you are taking one more time the magnitude, so it becomes magnitude cube. Similarly, beta, when we talk about F21, that is the force of 2 on 1, it is parallel to R21. How to write R21? R1 minus R2 by magnitude of it. Already there is magnitude of square. When you write unit vector as vector upon magnitude, you will get magnitude cube. So this is the formula for Coulomb's law in the vector form. समझ में आया भाई? So what is F21? Force due to 2 on 1. And F12 is force due to 1 on 2. ठीक है? एग्जाम दोस्त वाला देखो बेटा, लेटेस्ट लेक्चर वही है कन्वोल्यूशन वगैरह के लिए. ठीक है? बात क्लियर हो गई यहां तक भाई? Is that clear to everyone? Now beta, when you want the force on a single charge because of multiple charges, we use the principle of superposition. Why? Because force between any two charges is independent of the presence of a third charge.
यानी दो चार्जेस आपस में कितना फोर्स लगाते हैं बेटा, ये इस बात पे निर्भर नहीं करेगा वहां पे कोई तीसरा प्रेजेंट है या नहीं. तो वी विल जस्ट कैलकुलेट फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q, Q2 and Q, Q3 and Q, and we will add them. But remember, when you are adding them, they will be added as vectors. जब भी आप इनको ऐड करेंगे ये वेक्टर्स की तरह ऐड किए जाते हैं. सर हाउ टू ऐड वेक्टर्स? Either use the parallelogram law, polygon law, triangle rule. But in integration or summation, beta, how do we add vectors actually? We break a vector into components. Like we will break a vector into x, y, z component and take the sum of each component individually. हर component का sum या integration individually लिया जाता है. Next is the electric field intensity. Now, beta, there was one question in the mind. How does it happen that when a charge comes near to another charge, it experiences a force? ऐसा कैसे होता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के नजदीक आकर के फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बट व्हेन दैट चार्ज इज रिमूव्ड देयर इज नो फोर्स? चार्ज हटाते कोई फोर्स नहीं है. मान लो मैं एक स्टेशनरी चार्ज हूं, मैं एक जगह खड़ा हूं, यू आर अ मूविंग चार्ज, यू कम नियर मी, यू एक्सपीरियंस अ फोर्स, देन यू गो अवे, इज देयर नथिंग? नो. So what did scientists say? That even if there is no other charge, there is only one charge, this charge has spread its influence in the surrounding. जब मैं एक अकेला चार्ज भी हूं बेटा, मैंने अपने चारों तरफ अपना फील्ड बिछा के रखा है. Now as soon as you enter that field, you will experience a force, and that is where the concept of electric field came. इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ही वहां से आया कि भाई जब कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं, जब कोई फोर्स नहीं, तब एक चार्ज के नजदीक ऐसा क्या रहता है कि दूसरा चार्ज आने पे उस पे फोर्स लगने लगता है. So that is to explain the influence of a charge in its surrounding, we had to define a term called electric field. So electric field is basically the region around a charge in which another charge will experience the force. But what is electric field intensity? Electric field intensity signifies how strong is the influence of a charge in its surrounding. एक चार्ज का अपने आसपास के रीजन में कितना असर है, कितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड है, that is the intensity of the electric field. So how did we define beta? We said कि electric field should be independent of the presence of any other charge. जैसे मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपसे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इट शुड नॉट डिपेंड ऑन यू, बट एट द सेम टाइम माय स्ट्रेंथ ऑफ इन्फ्लुएंस शुड बी प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि फोर्स कितना लग रहा है, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट डिपेंड ऑन विच चार्ज इज कमिंग इन माय प्रेजेंस. कौन सा चार्ज मेरी प्रेजेंस में आ रहा है उस पे इंडिपेंडेंट रहे, but force के proportional. So for that what we did is we defined electric field as force per unit charge. We divided the force expression by the test charge. So this is the source charge beta. This is the source charge creating the electric field. This is another charge kept nearby to the source charge which is experiencing a force. ये source charge के नजदीक रखा है, ये force experience करेगा. So I'm saying electric field should be independent of this, but it should be proportional to the force. So we defined it as F by small q. तो हमने क्या किया, F by small q define किया and we defined it in the radial direction. So what is AR cap? AR cap is a unit vector with treating the point charge as origin. AR cap आपका radial direction है. अगर आप point charge को origin मानते हैं तो वहां से उस पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर लीजिए जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. ओके, यू ड्रॉ अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट वेयर यू नीड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रीटिंग द पॉइंट चार्ज एज ओरिजिन. समझ में आई बात? पॉइंट चार्ज को ओरिजिन मानते हुए उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाइए जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. एंड वेदर यू टेक कूलॉम्स लॉ और यू टेक इलेक्ट्रिक फील्ड, यू हैव टू पुट Q विद द साइन. Now, how can we find the force then? If electric field is force per unit charge, then force will be charge into electric field.
So whenever a charge enters the electric field, it will experience a force, and that force will be equal to charge into electric field. Now, if beta charge is positive, if the charge is positive, F vector and E vector will be parallel to each other. Okay, if the charge is positive, F vector and E vector will be parallel to each other. If charge is negative, F vector and E vector will be opposite to each other. अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पैरेलल आएंगे, नेगेटिव है तो अपोजिट आएंगे. ठीक है. So for a positive charge, the force is always parallel to the field. For a negative charge, force is always opposite to the field. Now, beta, we cannot see the electric field, but we wanted to understand the pattern of electric field. For that purpose, we talk about the electric field lines. How do we draw the electric field line? Electric field lines are also known as the electric lines of force. So near a system of charges, beta, we observe the direction of the force experienced by a test charge. अगर आप एक कूलाम का टेस्ट चार्ज लेकर के चलें, उस पे फोर्स किस दिशा में लग रहा है, वो दिशा को ट्रेस करते जाएं, तो you can draw the lines, the pattern of the force. They are said to be electric field line. Now these lines have some properties, like they start from a positive charge and they end at a negative charge. The tangent to the line gives the direction of electric field and the electric force. Two lines cannot intersect. Why? Because if they intersect at one point, there will be two tangent. But at one point, there can't be two direction of electric field. एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं हो सकती, इसीलिए दो टेंजेंट का कोई सेंस नहीं बनता है. इट डजंट मेक एनी सेंस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई सेंस ही नहीं बनता है बेटा कि हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें, इसीलिए वी से दे कैन नॉट इंटरसेक्ट. ओके, so when you see the field lines of a positive charge, they are radially outwards. So positive charge is the originator of the electric field. पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती है, पैदा होती है, तो ये ओरिजिनेटर है. तो अगर एक सिंपल पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी? रेडियली आउटवर्ड. तो इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिक? इफ यू टेक अ स्फीयर बेटा, if you take a sphere around a positive charge, a sphere of radius r, so at every point on the sphere, electric field magnitude is same. ठीक है? So at every point on sphere, electric field magnitude remains same. ठीक है बेटा, हर पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड आता है. नाउ व्हेन यू टेक टू पॉजिटिव चार्जेस नियर टू ईच अदर, तो देयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम रिपेलिंग ईच अदर. जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, same pattern you will see in the electric field lines. They are pushing each other away. Electric field lines भी एक दूसरे को पीछे की तरफ ढकेल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि लड़ रही हैं. So that is how electric field lines behave when they are between two positive charges. And if you see beta, if the charges are equal, then electric field midway will become zero. ठीक है? इफ चार्जेस आर इक्वल तो बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी. ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट अ नेगेटिव चार्ज, एंड वेयरएवर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, it is called as neutral point. Now electric fields are more condensed near positive charge because मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज हायर. ठीक है? तो ये ज्यादा डेंस है, मोर डेंस नियर पॉजिटिव चार्ज. काहे ज्यादा डेंस है बेटा? क्योंकि मैग्नीट्यूड ज्यादा.
Electric field is always proportional to the charge. Okay. So always remember, the higher the charge, more closer will be the electric field lines. Now, when you take a negative charge, all the electric field lines will terminate at that charge. They will converge on that particular charge. उस charge पे converge करती हैं. Again, it is spherically symmetric. माने it will be same at all points of a sphere when you keep point charge at the center. Point charge को sphere के center पे रख दीजिए. हर point पे electric field आपकी सेम आएगी. ठीक है. At every point you will get the same electric field. Are you getting my point, beta? At every point you will get the same electric field. Just a moment. चलिए. Now, when positive and negative electric charges are of same magnitude, the lines are perfectly symmetric between the two charges. They start from positive, they end at negative, and they are perfectly symmetric. अगर एक का magnitude दूसरे से ज्यादा होता है, then they are concentrated more near the higher magnitude of charge. But if both magnitude are same, they are perfectly symmetric. Okay, they are perfectly symmetric. Now, beta, when two positive charges are there having different magnitude, then you will see the neutral point is closer to the charge having higher magnitude. Sorry, lower magnitude. Closer to smaller charge. ऐसा क्यों सर? देखो यार, at neutral point electric field must be 0. So you will say that the two electric fields should be equal and opposite. R1 by R2 तो यानी जिसका चार्ज ज्यादा होगा उससे डिस्टेंस भी ज्यादा आएगा, है ना. द हायर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल हैव मोर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल पॉइंट. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम? द वन इज कॉल्ड एज द लीनियर मीडियम. लीनियर मीडियम माने बेटा वेयर एप्सिलॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक और द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर एप्सिलॉन या फिर म्यू आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इंडिपेंडेंट हो जाएं तो दैट इज लीनियर. बट बेटा व्हेन यू टॉक अबाउट दैट एप्सिलॉन डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक और द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट इज नॉन लीनियर. If epsilon depends on the coordinates or the position of the point, independent of the field, but it depends on the position of the point, then it is called inhomogeneous. So linearity के लिए you have to see whether epsilon or mu depend on the electric or magnetic field. For homogeneity you have to see whether they depend on the coordinates. अगर कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा तो इनहोमोजेनस, नहीं डिपेंड करेगा तो होमोजेनस. लाइक हियर इट डिपेंड्स ऑन एक्स, इनहोमोजेनस, कांस्टेंट, होमोजेनस. आइसोट्रोपिक माने मीडियम हैज द सेम प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन. दैट इज इन एवरी डायरेक्शन द अलाउंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू द फील्ड इज इक्वल. हर दिशा में फील्ड को जाने देने की क्षमता या रोकने की क्षमता बराबर होती है तो उसे आइसोट्रोपिक कहा जाता है. दैट मींस परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी शुड नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, शुड नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन. अब भाई यहां पे अभी मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डाउट नहीं बताऊंगा,
So for isotropic medium, beta, when we write the permittivity as a tensor, as a matrix, it should be a diagonal matrix. बाकी ओमेंद्रा, आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रैश कोर्स देखो, अभी जो रिसेंटली यूट्यूब पे खत्म हुआ है इन्वर्टर वाला लेक्चर, आपको आपका जवाब मिल जाएगा. ठीक है बेटा. So but if you see the diagonal elements are unequal, then it is non-isotropic. अगर diagonal element unequal हुए, why? Because then in x direction relative permittivity is 2, in y it is 3, in z it is 4. It is non-isotropic. ठीक है. And in this case where it is not even a diagonal matrix, then also it is anisotropic. So if the medium is isotropic, the permittivity matrix should be a scalar matrix. What is a scalar matrix, बच्चों? A matrix which is a diagonal matrix and all diagonal elements are equal. एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि डायगोनल तो होती ही है और उसके सारे डायगोनल एलिमेंट बराबर होते हैं, उसे कहते हैं स्केलार मैट्रिक्स. पावर सिस्टम का क्रैश कोर्स ऑलरेडी इस चैनल पे जाकर के चेक करो भाई, होम पेज पे ही मिल जाएगा. Now, how to write the equation of the electric field lines? We saw electric field lines qualitatively, graphically हमने visualize किया, but उसे mathematically कैसे लिखें? So you have to write a equation like this: dx upon ex, dy upon ey, dz upon ez. dx, dy, dz तो clear है. What is ex, ey, ez? It is the x, y and z component of electric field. But what if we have any other coordinate system? Then you write like this: h1 du by eu, h2 dv by ev, h3 dw by ew. I told you what are uvw? uvw are the three coordinates and h1, h2, h3 are their multiplication factor when you write the differential length. Like in case of cylinder, u is rho, v is phi, w is z. H1 is 1, H2 is rho, H3 is 1. In spherical, U is R, V is theta, W is phi. H1 is 1, H2 is R, H3 is R sin theta. Like that. तो मैंने बता भी दिया, देखो spherical और cylindrical के अंदर. ठीक है. Now how to find the electric field due to system of charges? Again, the simple logic superposition. When you want to find the electric field at a point, because of multiple charges, what do you need to do? You need to take the vector sum of the electric fields of individual charges. Individual charges के electric field निकाल करके मेरे बच्चों ऐड कर लेना. बट कैसे ऐड करोगे? वेक्टर के फॉर्म में. How do we add the vectors? We break the vectors into individual component and then we add them. Individual component में तोड़ के ऐड करते हैं. So R vector is the position vector of the point where you want the electric field. Ri vector is the position vector of the point where the charge is located. तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है. अभी तक देखिए मैंने आपको 2 ही 3 फॉर्मूले बताए हैं बेटा. एक कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया, है ना. अभी तक और कोई फॉर्मूला मैंने खास डिस्कस नहीं किया है. Now, what if the charge distribution is continuous? We do not have point charges. We have line charge, surface charge or volume charge. Then also, beta, you approach via point charge. You take a small section of a continuous charge distribution, okay, and you treat it as a point charge. Find the electric field because of it, and then you integrate to find the electric field due to the entire solid. Suppose there is a line charge. I will take a small length dl and the dq will become rho l dl. If it is a surface charge, I will take a small area ds, then dq will be rho s ds. If it is a volume charge, I will take a small volume dv and then dq will be rho v dv. कितना आएगा? Rho v dv. So you will find the electric field due to this point charge at the desired point. And then do component by component integration. Integration हमेशा एक एक component का किया जाएगा to find the overall field. So you can remember the formula. First formula for finite line charge. अब देखो formulas बता रहा हूं बेटा. So whenever a line charge is there, I am assuming that the line charge lies on the
Z axis. It lies between two coordinates Z1 and Z2. ये फाइनाइट लाइन चार्ज है, ये Z1 से Z2 के बीच में लाई करता है. Now this is the distance is rho. The point where the electric field is to be determined, point P, lies in XY plane. ये जो पॉइंट P है ना, ये XY प्लेन में लाई कर रहा है, तो डिस्टेंस इज रो, एंगल इज फाई. नाउ बेटा, फ्रॉम दिस लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू P, द लोअर एंड मेक्स एन एंगल θ1, द अपर एंड मेक्स एन एंगल θ2. आपने क्या किया, ओरिजिन से उस पॉइंट को जोड़ा जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वहां से लाइन चार्ज का नीचे वाला हिस्सा θ1 एंगल बनाता है, ऊपर वाला हिस्सा θ2 बनाता है. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू कंपोनेंट्स बेटा. वन इज इन द रेडियल डायरेक्शन E rho एंड वन इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स विच इज EZ. एक नीचे की तरफ और एक बाहर की तरफ. नाउ दिस E rho कंपोनेंट इज rho L by 4 pi epsilon rho. Rho L is the line charge density. Rho is the distance in the XY plane of the point P. Then sin θ2 minus sin θ1. Because the Z component is vertically downward, so it is minus AZ. Here you have cos θ1 minus cos θ2. Sir, how to take θ1 and θ2? Simple beta. First, join the origin to the point where you want the electric field. Then check the angle of the lower end and the angle of the upper end. Sir, how to find rho? Rho is the perpendicular distance. How to take it? If the charge lies along the z-axis, take the distance in terms of x and y coordinates. If the charge lies on the x-axis, take the distance in terms of y and z coordinate. If the charge lies on the y-axis, take the distance in terms of x and z coordinate. जिस भी एक्सिस पे चार्ज लाई करे उसके अलावा बाकी दो कोऑर्डिनेट के टर्म्स में डिस्टेंस लीजिए, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस. समझ में आया? दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. नाउ हाउ मेनी केसेस कैन वी डिराइव फ्रॉम दिस? सपोज द वन एंड इज अबव द XY प्लेन, so this end is above XY plane, but the lower end is below XY plane. दूसरा छोर XY plane के नीचे है. So now what we will do is, we will take θ2 as positive but θ1 as negative. θ2 को पॉजिटिव लेंगे बेटा और θ1 को नेगेटिव लिया जाएगा. So when you take θ1 negative, cos is not affected. cos पे फर्क नहीं पड़ता है, but sin will become negative. तो आपको अगर नहीं भी याद करना क्या होगा, आप बस ये याद कर लीजिए कि θ1 को नेगेटिव डालते हैं, आपको अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है? यू डोंट नीड टू रिमेंबर द सेपरेट फॉर्मूला, जस्ट रिमेंबर θ1 will be taken as negative. Now if one end of the charge goes up to infinity, now beta, when you see a very tall building, your neck will bend by 90 degree. So when it goes up to infinity, the angle will be 90 degree for that particular end. उस छोर का एंगल 90 लिया जाएगा. तो sin θ2 will become 1 and cos θ2 will become 0. ठीक है? And if this point lies in the XY plane, charge is starting from XY plane, θ1 will be 0. अगर चार्ज XY प्लेन से शुरू होता है तो θ1 0. Now infinite line charge माने which goes from minus infinity to plus infinity. जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाए उसे कहेंगे इन्फिनिट लाइन चार्ज. So the end, upper end angle is 90, lower end is minus 90. In this case beta, the Z component of electric field is 0 and the rho component is E rho L by 2 pi epsilon rho. This is very very important. ठीक है? ये वाला important है, तो infinite वाला very very important है. समझ में आई ये केसेस? मुझे बताओ भाई, EMFT में आप लोग फॉर्मूलाज में ही फंसते हैं. क्लियर हुआ ये केस? क्लियर हुआ?
यहां पे बेटा सिंपल फंडा है, अगर एक्स वाई प्लेन के ऊपर तो पॉजिटिव और नीचे तो नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिंग चार्ज। तो रिंग चार्ज इज केप्ट इन द एक्स वाई प्लेन एंड वी आर टेकिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट along the axis of the ring, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 pi epsilon QH by a square plus h square to the power 3/2. What is Q? Total charge on the ring. Now ring is also a wire. Ring is also a wire. So we talk about the line charge density. So what is the length of wire in the ring? It is the circumference. तो लाइन चार्ज डेंसिटी इंटू सर्कमफेरेंस। रिंग भी आपका लाइन चार्ज ही है बेटा, तो उसकी लाइन चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ करोगे तो रोएल इंटू 2 पाई आपको करना पड़ेगा। तो दैट इज क्यू एंड ए इज द रेडियस, एच इज द हाइट ऑफ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। एंड हियर इफ यू डिफरेंशिएट इलेक्ट्रिक फील्ड you will find maximum field will occur at a/√2, ठीक है। तो एक्चुअली ना बेटा electric field increases up to a certain distance and then decreases, okay। इलेक्ट्रिक फील्ड एक डिस्टेंस तक, एक हाइट तक बढ़ती है फिर घटती है। Then beta arc, when I am not taking a proper circle but I am taking a part of circle. Now this P point is the center of the arc. Now we are not taking a point on the axis but we are finding at the center of the arc. So it is rho L by 2 pi epsilon A. A is the radius, sin theta by 2. Theta is the angle of the arc. Theta will be angle of arc. Just a moment. क्या? ठीक है बेटा। Now infinite sheet of charge. This is very important beta. At an infinite sheet of charge, electric field is always perpendicular to the sheet. Now beta, what is the meaning of infinite sheet? Again, infinite sheet meaning is the size of the sheet is much larger than the distance of the point where you are calculating the field. Now for infinite sheet, the charge density is the surface charge density and epsilon is the permittivity of medium. Sir, how to take the direction of the field? Beta, direction will always be perpendicular to the sheet. For positively charged sheet, it is away from the sheet. Okay. So now beta, if the sheet is positive, electric field will be away. If it is negative, it will be towards the sheet. Next is the disk. Disk is also a surface charge because we are talking about an area. The electric field of the disk is obtained by integrating the ring charge.
So now beta, we are calculating the electric field at a point P on the axis of the disk at a height h. Now beta, this is same as the infinite sheet charge. In addition, you have 1 minus h upon root a square plus h square, where a is the radius of the ring and rho s is the surface charge density. Now beta, here if you put a tending to infinity, you will obtain the electric field for the infinite sheet of charge. अगर infinite sheet चाहिए तो a को infinity डाल दीजिए. नेक्स्ट वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल. तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट शीट चार्ज. ओके, तो व्हाट इज अ डाइपोल बेटा? डाई माने टू, पोल माने पोलैरिटी. व्हेन देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस but bound together माने they work as a single system, they cannot be separated. यानी चलेंगे तो एक साथ चलेंगे, अलग अलग मूवमेंट नहीं होगा. So the dipole moment is charge into the separation and it is directed from the negative to the positive charge. ये माइनस से प्लस की तरफ होती है. The value is Q into D, Coulomb meter. Now there are two type of electric field due to a dipole. The one electric field lies along the axis of the dipole. जो dipole की axis है उसी पे point ले रहे हैं. That is called axial electric field beta. The value is 2 times p vector by 4 pi r cube. Now remember this r is much greater than d and r is distance of point from center of dipole. पॉइंट का डिस्टेंस आपको डाइपोल के सेंटर से लेना है. तो रिमेंबर टू अप्लाई दिस फॉर्मूला बेटा, फर्स्ट यू शुड नो द डाइपोल मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट एंड द डिस्टेंस और द लेंथ ऑफ द डाइपोल शुड बी वेरी स्मॉल. Second is the equatorial electric field. Equatorial electric field is the on perpendicular bisector of dipole. डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लेते हैं ना उस पे निकाली जाती है. तो इट इज माइनस पी बाय 4 पाई एप्सिलन आर क्यूब. माइनस पी बाय 4 पाई एप्सिलन आर क्यूब. दैट इज अगेन बेटा आर इज द डिस्टेंस of point from center of dipole and it is much greater than D. Now this electric field is proportional to minus p vector, so it is opposite to dipole moment. Dipole moment is upwards, the field is downwards. Now what if the point is neither at equatorial position nor at the axial position? What to do in that case? Now beta, you do one thing. You break a dipole into two parts. Suppose this is my dipole moment. The position vector of the point makes an angle theta from the dipole moment. Now beta, you take two components of P. One along the position vector which is P cos theta. One perpendicular to position vector P sin theta. For P cos theta, this point is axial. For P sin theta, this is equatorial.
So the equatorial field will be P sine theta by 4 pi epsilon r cube. Axial will be P cos theta, 2P cos theta by 4 pi epsilon r cube. Axial is in AR cap. Equatorial, this direction is A theta. So equatorial is in A theta cap. So this is your spherical coordinates. This is in spherical coordinates. Okay, ये spherical में होता है. Give me a moment. Okay, चलिए. Now beta, we know that whenever a charge is placed in an electric field, it experiences a force. Now dipole contains two opposite polarity charges. So the force experienced by the two charges is equal and opposite. If the force on the two charges is equal and opposite, it produces a rotational effect that is called as the torque. Now the torque on a dipole is P cross E, that is cross product of the dipole moment and the electric field in which it is kept. But remember, the electric field should be uniform. Uniform माने constant at all the points. इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, माने हर पॉइंट पे बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलनी चाहिए, तभी ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, दैट इज पी क्रॉस ई. ये बात क्लियर हो गई बेटा? पी क्रॉस ई कैसे लगाते हैं? इज दिस क्लियर? तो दैट इज द टॉर्क ऑन अ डाइपोल. एरो कैप को एक्स वाई फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है. एरो कैप को सर एक्स वाई फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो क्या होता है, अगर आपको एरो कैप को लिखना है एक्स वाई में, डू वन थिंग. इफ द चार्ज इज अलोंग द जेड एक्सिस, तो व्हाट विल बी योर रो? ठीक है, चार्ज अलोंग जेड एक्सिस एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट. मैं तो ये भी नहीं कह रहा पूरा प्रॉपर जेड एक्सिस पे, मैंने एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट उसका कोऑर्डिनेट दे दिया और पॉइंट पी है मेरा एक्स कॉमा वाई पे. तो whenever the charge is in a particular direction, when you take the distance with respect to the other two to a unit vector. समझ गए? क्या करना होगा? चार्ज जैसे x एक्सिस पे होता, तो आप पॉइंट और चार्ज के yz कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो, उससे रो वेक्टर आएगा. चार्ज अगर x एक्सिस पे y एक्सिस पे है, तो आप पॉइंट और चार्ज के x और z कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो, उससे रो वेक्टर आएगा. देन कन्वर्ट इट टू अ यूनिट वेक्टर. ओके, now beta, there are some tips and tricks for shortcut solution. The force between two spheres will opposite charge q and minus q. It is more than the 2-point charges. Why? Because the separation between positive and minus charge is less than r. So the separation between the charges is less than r, so the force is more. Just a moment.
Okay. Next, beta, electric field depends on how the charge is spread, but the potential only depends on the amount of charge. Why is that? Because when you calculate the total electric field, you have to take the vector sum, but potential is a scalar quantity. So while you are calculating the total potential, you are just taking the integration or the sum. So that is why it does not depend on the distribution of the charge. Point समझ में आया? पोटेंशियल ये देखता है कि टोटल चार्ज कितना है. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये भी महत्व रखता है कि चार्ज कहां कैसे स्प्रेड है. ओके, so the electric field at the center of the arc is given by this formula. Now force between two charges, linear charges, with the charge density lambda 1 and lambda 2. So it is the infinite charge. So I find the electric field due to one charge multiply by the second charge. मैंने एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और उसमें दूसरा चार्ज मल्टीप्लाई कर दिया. So I find it using Q into E. Okay, I have done Q into E. Next we talk about the flux. Flux is basically कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना पास करती है किसी एक सरफेस से. संदीप भाई, रोटेशन में आपको कुछ समझना नहीं है कि रोटेट कैसे कर रहा है, आपके लिए फॉर्मूला मैटर करता है. रोटेशन ये होता है, देखो जैसे ये एक डाइपोल है, अब इसके दो एंड्स पे अगर मैं अपोजिट फोर्सेस लगाऊं, जैसे अब अपोजिट कैसे लगा देता हूं, चलो ऐसे देखते हैं. ऐसे है ये डाइपोल, एक तरफ से नीचे फोर्स लगा रहा हूं, एक तरफ से ऊपर, सो इट विल रोटेट, इट विल रोटेट. So whenever on a body two equal and opposite forces act on the two side, it will rotate, it will rotate. जैसे देखो, ऊपर वाला फोर्स ऊपर लगाऊं, नीचे वाला पीछे, तो घूम रहा है ना पेन. It is rotating when two surfaces or two forces are moving in the opposite direction. तो same way बेटा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है पैरेलल टू ई, नेगेटिव चार्ज पे लगता है अपोजिट टू ई. These two forces are equal and opposite, so they will produce rotational effect. Okay. Now, what is electric flux? It is the amount of the electric field lines that pass through a surface. So, electric flux is derived with the help of electric flux density, which is written as epsilon into E. E को लिखते हैं epsilon E. So it is Q by 4 pi r square AR cap. It is independent of the medium. तो ये जो फ्लक्स डेंसिटी है मीडियम से इंडिपेंडेंट होती है. इट इज Q by 4 pi r square. This is called electric flux density. It has the same direction as electric field, but the point is it is independent of the medium. So electric flux is nothing but the surface integral of the flux density, and it is proportional to the number of electric field lines that pass through a surface. अब बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है. Many people are under the misconception that electric flux is equal to the number of electric field lines. No, my friend. Electric flux is not equal to the number of field lines. It is proportional to the field lines. So if the number of field lines passing through a surface increase, the electric flux increases. But you cannot say if 5 lines are passing that flux will be 5. ऐसा नहीं होता कि सर 5 लाइन गुजर रही थी, मैंने लगा दिया फ्लक्स 5 है. गलत. It is directly proportional. So the flux is the surface integral of d dot ds. ds vector is what? I explained already. It is the area vector. It is taken perpendicular to the area. In different coordinate system, we know ds vector in different areas or different direction. Now d is epsilon into E. So flux density is in the same direction as the electric field. Flux density is d psi by ds. Psi is the electric flux, ds is the small area. Okay. Now net electric flux through a closed surface, if the field is uniform, field uniform माने flat. If there is flat field, then you take any surface, any closed surface माने which has a certain volume. Suppose this calculator is a closed surface. When the electric field lines are flat like this, then the number of field lines that will enter the surface will be same as the number of lines leaving on the other side. So the net flux will be 0.
जितनी लाइन एंटर करेंगी उतनी ही लीव करेंगी, तो एक्चुअली लीविंग लाइंस इज काउंटेड एज पॉजिटिव फ्लक्स, एंटरिंग इज टेकन एज द नेगेटिव फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स विल बी जीरो। समझे कैसे जीरो हुआ? जितने लोग अंदर आए उतने ही लोग बाहर चले गए, तो नेट फ्लक्स इज जीरो। ओके, so Gauss law is a law which is based on the electric flux. So Gauss law says the flux through a closed surface is equal to the charge enclosed by the surface. एक closed surface से कितना flux बाहर आता है? How much amount of electric flux is leaving a closed surface? That is always equal to the charge that lies inside the surface. चार्ज एनक्लोज का मतलब होता है कितना चार्ज सरफेस के अंदर रखा है। नाउ बेटा, टू अप्लाई द गॉस लॉ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज अ क्लोज सरफेस कॉल्ड गॉसियन सरफेस। हाउ टू चूज गॉसियन सरफेस? तो बेटा, बिफोर अप्लाइंग गॉस लॉ वी मस्ट ऑलरेडी हैव एन आइडिया अबाउट हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। मुझे ये आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। व्हाई? बिकॉज आई विल चूज अ गॉसियन सरफेस सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मुझे फील्ड का डायरेक्शन पता है तो ऐसा सरफेस चुनिए जिसके परपेंडिकुलर में आपकी फील्ड आ जाए, और ऐसा सरफेस चुनिए जिसके हर पॉइंट पे फील्ड आपकी बराबर हो, हर पॉइंट पे फील्ड आपकी बराबर हो। सर स्फीयर हॉलो होगा या सॉलिड? कैसा स्फीयर बेटा? स्फीयर तो दोनों तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क, बेटा ये वही फॉर्मूला है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। यहाँ पे थीटा आर्क का एंगल है, थीटा रेडियन क्या है? थीटा एंगल रेडियन में है, और ये क्यू के फॉर्म में, लैम्डा की जगह मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया मैंने आपको रोएल के फॉर्म में बताया। ठीक है, ये थीटा के फॉर्म में दे दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो मैं दिखा देता हूं, मैंने कहां पे आपको आर्क का फॉर्मूला बताया था, ये रहा। देखो यहां पे थीटा हमने क्या लिया था? टोटल एंगल लिया था, साइन थीटा बाय 2 आया था। अब रोएल को आप क्या कर दोगे? लेंथ ऑफ द आर्क विल बी आर थीटा, दैट इज रोएल विल बी चार्ज अपॉन ए थीटा, अगर ए लेंथ ले रहे हो। ऐसे आ गया ना? ओके, अब यहां पे आप ये भी कर सकते हो, थीटा बाय 2। ठीक है, बात यही बन गई। तो नाउ बेटा, थीटा इज टोटल एंगल ऑफ आर्क इट इज टेकिंग एस 2 थीटा। ये टोटल एंगल 2 थीटा ले रहा है, तो इसने थीटा बाय 2 को थीटा लिख दिया। ओके बेटा, नाउ यू अंडरस्टूड दिस मच कि whenever you are applying Gauss law the surface should be perpendicular to the field, so we must already know the direction of the field, and at all point on the surface magnitude of electric field should be same. So like if you take a point charge, we know the electric field of point charge depends on R, so we must take a surface where R is same at all point of the surface. R हर point पे same आ रहा है, तो that is a sphere. A sphere is a surface where R is same at all the point. Second thing beta, electric field is in AR cap direction. AR cap is perpendicular to the sphere, and that is why we take a spherical Gaussian surface. हम spherical surface क्यों लेते हैं बेटा? क्योंकि AR cap जो होता है, AR cap आपका perpendicular होता है sphere के, और sphere के हर point पे electric field same आती है, क्योंकि at all points on the sphere R is same. Okay,
So now for point charge we take a spherical surface, for line charge we take a cylindrical surface, ठीक है, or you can say a hollow cylinder. For sheet charge either you can take a cuboid or a cylinder. For spherical charge take a sphere. Whenever you are finding the flux, consider the charges that lie inside the surface. But what about the charges that lie outside? Basically, beta, Gauss law never says that the charges that lie outside do not produce the electric field. No. Charges, whether they are inside the surface or outside, they will produce electric field. But the point is, any charge that lies outside the surface, the number of lines entering the surface because of the charge is same as the number of lines leaving the surface. So the net flux of the charges that lie outside the surface is 0. जितने भी चार्जेस बाहर लाई करते हैं ना, उनकी वजह से एंटर और लीव करने वाला फ्लक्स सेम होता है. एनक्लोज्ड सरफेस, कौन सा एनक्लोज सरफेस कह रहे हो भाई शुभम? मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या पूछ रहे हो. चार्ज एनक्लोज की बात कर रहा हूं, सरफेस एनक्लोज की तो बात ही नहीं कर रहा हूं. एक क्लोज सरफेस है. क्लोज सरफेस का मतलब होता है जिसके भीतर कुछ वॉल्यूम होती है. अब वो एक सिलेंडर है, हॉलो है या सॉलिड, वॉल्यूम तो दोनों में है. उसके अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है वो मैटर करता है. Okay. Now there is another form of the Gauss law called as the differential form or the point form. It says divergence of the flux density is equal to the volume charge density. Del dot D is rho V. Now, when we talk about flux density due to a point charge in a cube, if a point charge is kept in a cube, what is the total flux? ठीक है, flux कितना आएगा? So now beta, flux is equal to charge enclosed. So when it is at a corner, the charge enclosed is 1/8 of the total charge q by 8. When it is at a edge, it is 1/4 of the charge q by 4. When it is at a face, the charge enclosed is q by 2. And when it is inside the cube, then the charge enclosed is q. Then the charge enclosed is q. अगर ये आप समझना चाहते हो सर ऐसा कैसे हो रहा है, कोई 4 क्यूब हो गए. Now these are 8 cubes beta. So a charge lying at a edge is shared by 8 cubes. So inside one cube, how much charge will be there? Q by 8. If a charge lies on the edge, it is shared by 4 cubes, the lower 2 and the upper 2. So Q by 4. If a charge lies at a face, it is shared by 2 cubes, left and right. But if the charge lies inside a cube, it is not shared by anybody, is Q. लॉजिक समझे? अगर एक कॉर्नर पे लाई करता है तो 8 क्यूब उस चार्ज को शेयर करते हैं, इट इज Q by 8. एज पे लाई करता है तो Q by 4. अगर फेस पे लाई करता है Q by 2, सेंटर पे लाई करेगा Q by 8. विद इन गॉसियन सरफेस और क्लोज सरफेस, बेटा गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस ही होता है. ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा? What is the logic? Now, whenever we talk about a conductor, beta, whether it is a hollow conductor or a solid conductor, ठीक है? अरे FCC और BCC नहीं भाई, आप फेस वाले को चलो FCC बोल लो, बॉडी के अंदर लाई कर रहा है BCC बोल लो, ठीक है? और कॉर्नर पे लाई कर रहा है SCC बोल लो. ध्यान से सुनो. Whenever you talk about a conductor, whether it is a hollow conductor or a solid conductor,
A conductor always beta stores the charge on its surface. In a conductor, charges can never lie inside the conductor. So electric field is zero everywhere inside the conductor. Okay? If it is an isolated conductor, the entire charge will lie on the surface because there is no charge inside. So if you apply the Gauss law, inside the conductor, charge enclosed is zero. Therefore, electric field is zero. अगर आप कंडक्टर के ऊपर कह रहे हो सारा चार्ज सरफेस पे लाई करेगा, तो उसके अंदर तो कोई चार्ज है नहीं. उसके अंदर अगर आप गॉसियन सरफेस बना के गॉस लॉ लगाओगे भी, तो चार्ज एनक्लोज जीरो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आएगी. सेकेंडली बेटा, वॉट एवर इलेक्ट्रिक फील्ड यू डिराइव, it will be perpendicular to the surface of the sphere, and it will have a magnitude sigma by epsilon, where sigma is the charge density at that point. So now beta, when the shape of a conductor is not uniform माने जैसे एक sphere होता है, it is same at each and every point, but if it is not spherical, है ना, जैसे मान लो यार मेरे पास ये की है. Now the key has certain sharp edges, right? चाबी में कुछ ना कुछ sharp edges आते हैं. अब आप देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पे शायद आपको ज्यादा बेटर दिख रहा होगा ऐसे. तो चाबी में हमेशा कुछ ना कुछ sharp edges रहते हैं, right? So at sharp edges, because the area is very small, it is very sharp. Charge density is high, so the electric field is also very high, and that leads to the phenomena of corona, where you see sparking through the air. ये जो कोरोना डिस्चार्ज होता है ना, ये शार्प एजेस पे ही देखा जाता है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई होती है. नाउ हाउ टू अप्लाई गॉस थ्योरम टू फाइंड द इंड्यूस्ड चार्ज. नाउ सपोज बेटा, व्हेन देयर इज अ कैविटी, तो देखो ये जो ग्रे वाला एरिया है, दिस इज अ कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर कैविटी है. इनसाइड कैविटी देयर इज नो चार्ज. तो बेटा देयर विल बी नो चार्ज इंड्यूस्ड एनीवेयर. अगर स्टार्टिंग के लिए कोई चार्ज आपने दिया ही नहीं, तो कहीं पे भी कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होगा. तो नेट इंड्यूस चार्ज विल बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी जीरो. नाउ सपोज आई गिव अ नेगेटिव चार्ज हियर. नाउ लिसन वेरी केयरफुली बेटा. वी से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर शुड बी जीरो. नाउ दिस ग्रे रीजन इज द कंडक्टर. ये ग्रे रीजन क्या है? ये कंडक्टर आ रहा है. ठीक है. तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव प्लेस्ड अ क्यू चार्ज एट द सेंटर. इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ग्रे रीजन में. दिस ग्रे रीजन इज नथिंग बट अ कंडक्टर, so there should be electric field here. But what happens beta, minus q is induced at the inner wall of the conductor, so that net charge, this is my Gaussian surface, net charge becomes zero. ये जो मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये जो मैं स्फीयर बना रहा हूं, ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर नेट चार्ज जीरो कर दिया. तो व्हाट वी आर सेइंग इज, due to this positive charge there should be electric field, but inside a conductor the electric field must be zero, so a negative equal and opposite charge is getting induced, because of which net charge inside Gaussian surface is zero, so that electric field is zero. But conductor was neutral, it cannot get a charge without a source of charge. कंडक्टर स्टार्टिंग में न्यूट्रल था भाई, कोई चार्ज ही नहीं था, अचानक से कहां से चार्ज आ जाएगा. So to balance this minus q, a plus q charge is induced on the outer surface, so that net charge on a conductor remains zero, because charge can neither be created nor be destroyed. ये समझ में आया पॉइंट? बताइए भाई, ये पॉइंट समझ में आया आपको? ये क्लियर हुआ क्या हुआ यहां पे? नेक्स्ट, अब अगर आप Q चार्ज कैविटी को देते हो और कैपिटल Q चार्ज आप कंडक्टर को देते हो, ठीक है, तो नाउ कंडक्टर इज नॉट न्यूट्रल. कंडक्टर इज नॉट न्यूट्रल but carries capital Q initially.
ठीक है। So now beta, again to make the charge inside the Gaussian surface zero, your minus q will be induced inside. आपका माइनस q अंदर क्यों जा रहा है? Because electric field inside conductor is zero. So enclosed charge must be zero as per Gauss law. So minus q is induced, but total charge should be plus q. So on the outer surface you will get small q plus capital Q, so that total charge remains plus capital Q. देखो ना, q plus q minus q is capital Q. चमका ये चीज. Next beta, net electric field due to a charge placed inside the cavity and induced charge on S1 at any point outside S1 is zero. Okay. कहने का मतलब ये हुआ, ये Q और माइनस Q की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जो जाएगी वो तो जीरो ही जाएगी, राइट? बिकॉज दिस नेट चार्ज इज जीरो, so the electric field due to these two charges will become zero and the electric field will only be because of small q plus capital Q. ठीक है, स्मॉल q plus capital Q. तो ये जो अंदर वाला चार्ज है और जो इंड्यूस चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड B पे और C पे दोनों पे जीरो आएगी, और C पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिर्फ S2 वाले की वजह से आएगी. ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया ना, ये सारे सिचुएशंस बेटा, ये सारे सिचुएशन बता दिए. नाउ इफ द सरफेस इज यूनिफॉर्म द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल आल्सो बी यूनिफॉर्म. सरफेस यूनिफॉर्म है, बट नाउ दिस Q is not placed at the center. If Q is not placed at the center, मेरे बच्चों, the charge distribution on the inner surface will be non-uniform, but on outer surface it will be uniform. अगर आपने चार्ज सेंटर पे नहीं रखा तो इस सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा. If the cavity is non-uniform, then also minus q is non-uniform, but plus q will be uniform. दो सूरतों में बेटा अंदर वाला चार्ज नॉन यूनिफॉर्म आएगा, या तो स्मॉल q सेंटर पे नहीं रखा, या कैविटी आपकी स्फेरिकल नहीं है. If cavity is not spherical or the charge is not kept at the center, that will lead to non-uniform charge distribution. इंडक्शन का मतलब क्या होता है भाई? जैसे कहते हैं शुभम भाई, एक कहावत है हिंदी में कि संगत अच्छी होनी चाहिए, बुरी संगत का असर बुरा ही होता है. क्यों? क्योंकि अगर आप बुरे लोगों के बीच में रहोगे, गलत आदतों वाले, तो गलत आदतें आप अपना लोगे, आपके अंदर इंड्यूस हो जाएंगी. तो जैसे Q चार्ज आ जाने से इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो गए. क्या हुआ? इस Q चार्ज ने कहा मैं पॉजिटिव हूं और मैं नेगेटिव से प्यार करता हूं, तो यहां पे सारे नेगेटिव जमा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन यहां आके जमा हो गए, जिस वजह से बाहर में क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज. तो ये जो एक चार्ज से आकर्षित होकर दूसरा चार्ज जमा हो जाता है, इसे कहते हैं इंड्यूस चार्ज. नाउ बेटा, नाउ here S2 is spherical, the charge is not at the center, cavity is not uniform. So again at S1 charge will be non-uniform, but at S2 it will be uniform. What if the charge is at the center, the cavity is spherical, then minus q will be uniform. But because the outer surface is not spherical, the charge distribution on S2 will be non-uniform. Non-uniform माने unequal at different position. Okay? तो यही सेम चीज है. अब अगर चार्ज भी सेंटर से हिला दिया तो यहां पे भी नॉन यूनिफॉर्म और बाहर भी नॉन यूनिफॉर्म. समझ गए ना? एसेंस समझ गए ये चीज का? ठीक है. नाउ बेस्ड ऑन द गॉस लॉ बेटा, यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ लाइन चार्ज, इन्फिनिट लाइन चार्ज, इट इज रो एल बाय 2 पाई रो. दिस इज द फ्लक्स डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. फॉर स्फेरिकल शेल बेटा, स्फेरिकल शेल का मतलब क्या होता है? वेयर द स्फीयर इज एम्प्टी इनसाइड, स्फीयर अंदर से खाली है. तो नाउ बेटा दिस इज अ स्फीयर. मैं कलर चेंज कर देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. So this blue color is the sphere. I am taking two Gaussian surfaces, one inside the sphere
where r is less than a, one outside the sphere, capital R greater than a. A is the radius of the spherical charge and small r and capital R are the radius of Gaussian surface. So when you take r less than a, that is inside the sphere, the charge enclosed is 0, so electric field 0. When you take outside the surface, the charge enclosed is the total charge on the sphere, so the electric field is same as that of a point charge. अगर आप बाहर ले रहे हो गॉसियन सरफेस तो पूरा स्फीयर अंदर आ गया, तो चार्ज एनक्लोज कैपिटल क्यू हो गया, विच मीन्स बेटा यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली वो ऐसे निकली कि आप सारा चार्ज स्फीयर के सेंटर पे मान लो. दिस इज कॉल्ड एज अ शेल थ्योरम. So what is shell theorem? That if you want the electric field outside the sphere, then you can assume the entire charge concentrated at the center of the sphere to act like a point charge. Point charge की तरह. So electric field inside is 0. Outside it varies as 1 by r square. So maximum electric field will occur at the surface of the sphere where the distance is minimum, so electric field is maximum. समझे? बाहर जाने पे 1 by r square के साथ vary करती है. Now when the sphere is uniformly charged, that means it is a insulating sphere. For a insulating sphere, it can keep the charge inside it in the bulk of the sphere. Again we are taking two Gaussian surface, r less than a, r greater than a. Inside the sphere, outside the sphere. Now how to find the charge enclosed? Beta, for the Gaussian surface which lies outside, charge enclosed is very easy. It is the total charge. But for the Gaussian surface that lies inside, I will first find the charge density. Charge density. So total charge is charge density inside the sphere. It is 4 by 3 pi r cube. ये जो स्मॉल आर रेडियस का है इसके अंदर कितना चार्ज आएगा? चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रो वी इंटू 4 by 3 पाई आर क्यूब. नाउ डी डॉट डी एस इज चार्ज एनक्लोज्ड. व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर. तो डी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज रो वी इंटू 4 by 3 पाई आर क्यूब. So it becomes rho v r by 3, that is proportional to r. When you go outside, the entire charge is inside the Gaussian surface. What is the entire charge? Volume charge density into volume of the spherical charge. This is volume of spherical charge. Now I will apply Gauss law. D into 4 pi r square is rho v into 4 by 3 pi a cube. So D will be rho v a cube by 3 r square. Okay. Again, मैंने charge enclosed change कर दिया. So here बेटा, it is inversely proportional to r square, directly proportional to r. So inside the sphere, it linearly increases, then decreases as 1 by r square. Again, maximum at the surface of the sphere. For infinite sheet, we already know rho s by 2 is the flux density. Rho s by 2 epsilon is the electric field. Rho s by 2 epsilon electric field होती है और rho s by 2 flux density आती है. But if it is a thick sheet, in a thick sheet beta, the electric field is divided on the two sides as rho by 2 epsilon, rho by 2 epsilon. ठीक है, यहाँ पे भी rho by 2 थी ना, तो यहाँ surface charge density is rho. On the two side it is rho by 2 epsilon, rho by 2 epsilon. But if it is a infinite conducting plane, that is charge is on both the sides, then it will be rho by epsilon, rho by epsilon. यानी अगर एक ही पतली सी शीट है जिसपे पूरा चार्ज है तो रो बाय 2 एप्सिलन. अगर शीट के दो सरफेसेस हैं, है ना, जैसे ये मोबाइल फोन, एक स्क्रीन वाली साइड एक बैक वाली साइड, इफ बोथ आर स्टोरिंग द चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रो बाय एप्सिलन. बट इफ देयर इज ओनली वन सरफेस, इट इज वेरी थिन, देन इट इज रो बाय 2 एप्सिलन. ठीक है, चलो
तो ये सारे फॉर्मूले हैं बेटा जो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। चलो, कम टू द डेली क्विज बेटा। फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। कम ऑन एवरीबॉडी, फोर्स निकालिए। चलो भाई, now we only need the magnitude beta, because no answer is negative, so I'm only taking the magnitude. Okay, 10 to the power minus 3, 81, 324. This is B. 3.6 न्यूटन। ओके, यही आ रहा है सभी का 3.6। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ infinitely long uniformly charged wire with linear charge density lambda is proportional to। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r। Okay, A, very good. Next, a solid insulating sphere of radius r carries a volume charge density rho. The electric field at a point inside the sphere varies with the distance as। डिस्टेंस के साथ कैसे वैरी करेगी अगर स्फीयर के अंदर लोगे? अंदर की बात कर। So it is rho r by 3 epsilon. So it is directly proportional to r. Two isolated conducting sphere of radius r2r are charged to the potential V and 2V if they are connected by a thin wire. What is common potential? ये लेटर कर पाओगे बेटा, ये कैपेसिटर का सवाल है। कल आपको मैं, कल या परसों जब भी क्लास लगेगी, कैपेसिटर पढ़ाऊंगा, बता देता हूं। और आइसोलेटेड स्फीयर, now initial charges CV, final charge, when both are connected their potential will be same. When two bodies are touching na beta, always potential is same. Now by charge conservation can calculate 5V by 3. This is the formula for capacitance of a isolated sphere. Next, which of the following is not a property of electric field line? बताइए, which of the following is not a property of electric field lines? Their density is inversely proportional to field strength. Actually, it is directly proportional to field strength. Not inversely, directly proportional आता है। Okay? हाँ, कल का ऑफ रहेगा, कल बस मैथ्स का क्लास रखेंगे, तो ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, कल बस मैथ्स का क्लास रखें। A point charge Q is placed at the center of a spherical Gaussian surface. If the radius of the sphere is doubled,
what happens to the flux? What happens to the flux? It remains the same. A point they never intersect, तो सही तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो प्रॉपर्टी है ना भाई. पूछा है क्या प्रॉपर्टी नहीं है. नाउ बेटा फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड. As long as charge is same, flux will be same. A dipole of moment P is kept in a electric field at an angle theta. When will the torque be maximum? See, torque is P cross E. How to take the cross product? Sin theta is maximum at 90. Which statement about Gauss law are true? बताइए. This is MSQ. Which statements about Gauss law are true? So valid for all charge distribution. Relates the flux density. Can be applied to symmetric. Valid हर जगह है, लेकिन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सिमेट्रिक में निकाल पाओगे. फ्लक्स यू कैन फाइंड एनीवेयर. ठीक है. Flux can be derived for any distribution, but for electric field beta you need symmetry, and it is derived from Coulomb's law. ठीक है. Coulomb में जो 1/r² आता है वहीं से derive होता है. तो ऐसा नहीं है कि वैलिड नहीं है, फ्लक्स हर जगह निकल जाएगा. For electric field you need symmetry. For a conductor in electrostatic equilibrium, which points are correct? Electric field inside zero, charge is only on the surface. The surface is equipotential. That means potential is same at all point on the surface. Electric field just outside is perpendicular to surface. Normal to the surface value is sigma by epsilon. Now electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet. इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज जो आएगा, शीट चार्ज जो आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, रो बाय 2 एप्सिलॉन आया था, डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी, जीरो इनसाइड द शीट. अगर शीट कंडक्टिंग है तो उसके अंदर तो जीरो ही आना चाहिए. करेक्ट. सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. चलिए ट्राई दिस बेटा, ट्राई दिस वन. A large sheet carries a uniform surface charge density sigma. A rod of length 2L has uniform charge density 1 coulomb per meter on one half
-1 coulomb per meter on other half. The rod is hinged at midpoint O, makes an angle theta with the normal. Find the torque experienced by the rod. I am giving you a hint. Consider two equal and opposite charges at two sides of the center of rod. Find the torque and then integrate for the entire rod. पूरी रॉड के लिए फिर इंटीग्रेट करिएगा. करिए जरा, बनाइए इसको. देखें भाई, चलिए. देखो, I will consider a charge 1 dx here and -1 dx here. This length is x. So what is the dipole moment? The charge is 1 dx into the length is 2x. Now torque dp cross E. Now beta, electric field due to a positive sheet will be like this. Is rho s by 2 epsilon. So that is the angle will be theta, rho s by 2 epsilon, 2x dx into sin theta. So now for total torque beta, rho s sin theta by epsilon x dx. Now the total length is 2 meter. Total length is 2 meter. So x will go from 0 to 1. So rho s sin theta by 2 epsilon. Now what is rho s? ये तो 1 कूलम पर मीटर दिया है. सिग्मा दे दिया है. सिग्मा 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा. फिर sin 30 5 2.5 बाय एफ. अब इसमें वैल्यू डाल लेना एप्सिलन की. लॉजिक समझ में आया बेटा? यू अंडरस्टूड द लॉजिक? इस तरह से हमने अप्रोच किया है. We found a small dipole, we found the torque, then we integrated. Next, volume charge density is given, find the total charge. Very simple, it is just asking you a volume integration. बनाइए, simply asking you a volume integral.
देखो दिस इज इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बेटा, तो dv विल बी हाउ मच, रो को r लिख रहा है, r dr by dz. Now r is varying from 0 to 2. देखो this 2 meter is the radius, z is going from 0 to 4, that is 4, pi is going from 30 to 60. Now integrate everything separately, r square dr, r cube by 3, dz, z square dz, z cube by 3, and then d phi will be pi by 3, sorry sin phi भी तो था, sin phi d phi will be minus cos phi. Cos 30 minus cos 60. अब इसको सॉल्व कर लेना, 83.29 आ रहा है, क्लियर हुआ भाई? चलो नेक्स्ट. 2 point charges Q1, Q2 are positioned as shown below. The field intensity to the right of Q2 on the line that passes through the charges varies according to the law. आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दिखा दिया है. The field intensity is assumed to be in positive if it is in the direction of the positive x direction. यानी जो अगर राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसे पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव लिया जाएगा. Now magnitude of charge and the length is given. Find the value of B where the electric field is maximum. मुझे जानना है मैक्सिमम फील्ड किस डिस्टेंस पे आ रही है. ट्राई कीजिए. First, based on the pattern, try to recognize the sign of the charges. Then you can find. निकालिए.
Now, beta, if you see the electric field near to Q2 is minus infinity. Why? Because Q2 should be a negative charge. That is why electric field is negative and it is infinite. ये नेगेटिव में इंफिनिटी क्यों है बेटा? Because at Q2 distance from Q2 is 0. So electric field is infinity and it is negative, which means Q2 is minus 2 Coulomb. But afterwards, the electric field becomes positive, which means Q1 should be positive. Because if both charges were negative, beta, then electric field will always be negative. अगर दोनों चार्ज नेगेटिव होते तो हमेशा नेगेटिव होती. Now, what is the electric field at B? Because of Q1, it will be positive. Because of Q2, it will be negative. पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज. So it will be Q1 will be 2K by L is 2 meter, 2 plus B square K into 2 by B. Okay. Now DEB by DB okay. What will be B? .404. ठीक है, 3.40. And if you want, you can also find the electric field. B आपका 4 आ रहा है बेटा, 4 तो नहीं आ रहा. 4 तो नहीं आ रहा. चल, given that the net force on Q3 is in negative x direction, what is the force will be? So I am telling you the net force on Q3 is in negative x direction, but you do not know Q2. आपको Q2 नहीं पता, फिर भी आपको फोर्स निकालना है. निकालिए. You need to tell me the force even though you do not know Q2. चलो ट्राई कीजिए भाई. देखें भाई,
आइए। नाउ देखो बच्चों, I do not know Q2. So first thing I will judge is the polarity of Q. Between positive and negative charge, the force is attractive. So 4 microcoulomb is getting attracted towards -2. Now net force is to the left. That is only possible if this force is repulsive. And now you can clearly see beta that the net force will be to the left. Now, if the net force is horizontal, the vertical component of the two forces should get cancelled. Vertical component to cancel hona chahiye, right? Now, this angle will be 36.86, 53.13. This is 36.86. How, sir? Because beta, this angle will be this, ये जो 36.86 मैंने लिखा है, this will be tan inverse 3/4 और ये वाला tan inverse 4/3. Okay. Now vertical component of the two force, तो F1 वर्टिकल कंपोनेंट साइन से आएगा. So now F will be the sum of the horizontal components .8 F1 plus 0.6 F2. 1.8 by 4.45. Now F1 मैं लिख रहा हूं 9 into 10 की पावर 9. Distance is 4 centimeter. $56.25. Logic clear हुआ बेटा? Is this clear? I found F2 in terms of F1, which made the job easier to calculate the total force. इससे total force निकालना बड़ा easy हो गया. Clear हुआ ना सभी को? चलिए. Next, a flat square surface with sides of length 2 meter is described by the equation axis to y and z are varying from 0 to 2. Find the flux to a point charge q located at 0, 0, 0. Now x is 2, y and z are varying from 0 to 2. ठीक है? This is the surface. Now charge is kept at the origin. अब हमें बताना है इसकी वजह से फ्लक्स कितना आएगा. When the charge is kept at the origin.
चलो भाई, देखो इसमें क्या करना पड़ेगा। You have to take 4 such squares. Okay. Now, beta, you make a cube. You make a cube. So, make a cube with 6 faces, each having 4 such square. Enclosing charge Q. Now, flux through each face will be Q by 6. So, flux through each square, because each face has 4 square, Q by 24. Let's see. आपको Q by 24 एप्सिलॉन मिलता है क्या? Q by 24 एप्सिलॉन। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। 2 point charges are located at this point. What is the magnitude of the force? Now first you need to find the distance. Okay beta, $18 milli 180 micro Newton. ठीक है, आंसर विल बी सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट फाइंड द डिस्टेंस एंड फाइंड द फोर्स। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। दीज क्वेश्चंस वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर विद। अगला लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे इन क्वेश्चन से, एंड दिस इज योर असाइनमेंट। ठीक है, ये असाइनमेंट है, बाकी जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं दे विल बी डेल्ट विद इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्या भाई, गेट का वर्चुअल कैलकुलेटर का वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी पड़ा है बेटा, चेक कर लो। वर्चुअल कैलकुलेटर अंकित गोयल आपको मिल जाएगा। और बाकी अभी हम लोग 7 बजे मिलते हैं यूट्यूब पे। आप लोगों के लिए कुछ नई सीरीज मैंने प्लान की है, उसके बारे में बताऊं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरी